Hello and namaste everyone. Welcome back to One Stop for Civil Aspirants. If you are preparing for the GDS to MTS Departmental Exams, you are in the right place. सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा सो यू नेवर मिस एन अपडेट। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम वही MCQ प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने नाइट पोस्ट ऑफिस तक MCQ प्रैक्टिस किया था। आज हम नाइट पोस्ट ऑफिस के आगे वाले टॉपिक्स जैसे मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नॉर्मल वीक डेज हो गए बिजनेस आवर्स में, और हमारे बिजनेस डन ऑन संडेज एंड PO हॉलीडेज, ये सब टॉपिक्स हमने लेक्चर्स में कवर किया है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। तो इस पे बेस्ड हम MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले आप जाइए, इस वीडियो को पॉज करके उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद ही इस MCQ को आप अटेम्प्ट कीजिए। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे। आप अपने साथ कोई भी पेन और पेज लेकर बैठिएगा। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, आप पहले खुद उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मैं तो आंसर बताऊंगी ही, फिर आप उसको मिला लीजिएगा। फिर एंड में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका 20 में से कितना मार्क्स आपने पाया है। ठीक, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं MCQ प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच सिटीज़ हैव मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज? ऑप्शन ए बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर। ऑप्शन बी बॉम्बे, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर। ऑप्शन सी बॉम्बे, हैदराबाद, पूना, भिलाई। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आप अपने पेज पे राइट डाउन कीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है, फिर मैं आपको बताती हूँ वीडियो पॉज करके। ठीक, तो आपने बता दिया होगा, आपने लिख लिया होगा कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी जगहों पे मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज हैं। ठीक, मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होता है ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए, ढूंढिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, what type of mail is not handled by mobile post offices? Option A registered articles of letter mail. Option B air parcels. Option C insured and VP articles. Option D unregistered articles of letter mail. वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर नोट कीजिए। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर है इंश्योर्ड एंड VP आर्टिकल्स। ओके, इंश्योर्ड एंड VP आर्टिकल्स, ये इस तरह के जो मेल होते हैं वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस के द्वारा हैंडल नहीं किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डेज आर मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्लोज्ड? ऑप्शन ए संडेज ओनली। ऑप्शन बी पोस्टल हॉलीडेज ओनली। ऑप्शन सी संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज। ऑप्शन डी नेवर क्लोज्ड। So the correct answer is Sundays and postal holidays। ठीक, इन दिनों मोबाइल पोस्ट ऑफिस जनरली क्लोज्ड रहते हैं संडेज और पोस्टल हॉलीडेज पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच पोस्ट ऑफिसेज अंडर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स ऑपरेट? 6 आवर्स, 7 आवर्स, 5 आवर्स या फिर 3 आवर? सो द करेक्ट आंसर इज 5 hour. Option C. Question number 5. During normal working days, for how long are registered and insured articles booked? Option A 3 to 4 hours. Option B 5 to 6 hours, 6 to 7 hours, 8 to 9 hours. So the correct answer is option C 6 to 7 hours. Question number 6. On Saturdays, how long are savings bank and certificate transactions conducted? For 3 hours stopping at 1 p.m., for 5 hours stopping at 1 p.m., for 6 hours stopping at 3 p.m., for the entire day? So the correct answer is option A, for 3 hours stopping at 1 p.m. Now question number 7. What is the primary condition for posting letters on Sundays or postal holidays? Option A, payment of a late fee. Option B, posting only in night post offices. Option C, posting in RMS letter boxes during specific hours.
both A and C. So the correct answer is option D, both A and C. Now next question, question number 8. What type of articles are not cleared from street letter boxes on Sundays and postal holidays? Insured articles, registered, all type of articles, unregistered articles. So the correct answer is all type of articles. Option C. Next question. Question number 9. Where can machine franked articles not be posted on Sundays or postal holidays? Option A, RMS offices, post office letter boxes, mobile post office letter boxes. Option D, both B and C. So the correct answer is option D, both B and C. Now question number 10. What is the primary purpose of mobile post offices? Option A, providing postal services to rural areas, facilitating late posting in different city areas, handling insured and VP articles. Option D, delivering parcels. So the correct answer is option B, facilitating late posting in different city areas. Alright. So now next question, question number 11. Which mobile post offices are allowed to book money orders? Bombay and Delhi, Madras and Nagpur, Hyderabad and Bangalore, Ahmedabad and Jaipur. So the correct answer is option B, Madras and Nagpur. Question number 12. What is the latest time for public businesses to stop at post office counters on normal working days? 5 p.m. as per fixed business hours, 6 p.m., 7 p.m. So the correct answer is option B, as per fixed business hour. Alright, now next question number 13. For how long are registered articles booked on Saturdays? 3 hours stopping at 1 p.m., 5 hours stopping at 3 p.m., 6 hours stopping at 3 p.m. full day. So the correct answer is 5 hours stopping at 3 p.m. Now the question number 14. What is the maximum time allowed for savings bank transactions on weekdays? 5 hours, 6 hours, full working hour of the office until 3 p.m. Correct option is option C, full working hours of the office. Now next question. What type of articles are delivered at the post office counter during fixed hours? Option A, registered articles, insured articles, VP articles, all of the above. So the correct answer is option D, all of the above. Now question number 16. What is the key restriction for the late posting of letters on Sundays? Option A, only allowed in street letter boxes. Option B, requires payment of a late fee. Option C, only allowed in RMS offices. Option D, both B and C. So the correct answer is D, both B and C. Question number 17. Which articles are not booked in mobile post office? Registered articles, air parcels, insured articles, letter mail. तो हम इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम ये ध्यान नहीं देते हैं ये चीज़ नॉट. आप ध्यान देके इसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंश्योर्ड आर्टिकल्स, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट हैपेंस टू द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल्स ऑन संडेज? Option A, delivered at all times. Option B, not delivered at all. Delivered only during restricted hours. Delivered through mobile post offices. So the correct answer is option C, delivered only through restricted hours. Okay. Question 19. Where are RMS offices with specific working hours for registered articles listed? Part 1st of the guide, Part 2nd, Part 3rd, Appendix of the guide. मैंने पढ़ाया है आपको ये सभी चीज़ें. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ना बताया हो.
So the correct answer is option C. Next question, number 20. What is the purpose of the late fee charges mentioned in the guide? Option A, for posting insured articles. Option B, for late posting of registered letters, for delivery of parcels, for telegraphic money orders. सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, तो ये हमारा 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का सेशन कंप्लीट होता है. आई होप कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो. अगर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो तो आप फिर से लेक्चर्स को देख सकते हैं. नोट्स ना बनाया हो तो हैंड रिटन नोट्स शेयर किए गए हैं, साथ ही साथ आप उसको साथ ही में नोट्स बना लीजिए, उसको मेमोराइज कर लीजिए और फिर से आके इस वीडियो पे अपना MCQ प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आपके नंबर कैसे बढ़ के आते हैं. ठीक, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए. आई होप जब भी हमारा नेक्स्ट वैकेंसी आए MTS का डिपार्टमेंटल एग्जाम में तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, थैंक यू सो मच.